Hi, Assalamu alaikum. Dear students, other viewers, I'm Farooq Lone. I have chosen a very specific topic today, and it's a profound poem by a great poet. And I have taken it from the textbook of class 9th, but it may serve to senior secondary students who have this poem in their syllabus. And it may benefit to those students who are in their bachelor's with literature, English literature, and who are doing masters. When you read this poem, the poem is The Road Not Taken by Robert Frost. Robert Frost, after apple picking, mending walls, etc., this might have come to your mind. Two questions pop up when we read this poem. आपने भी शायद पढ़ी होगी, बहुत सारों ने ये पोएम पढ़ी होगी. जब आप पढ़ते हो तो इसमें जो शायर है वो जंगल से गुजरता है और फिर वो एक डाइवर्जन के पास पहुंचता है, एक ऐसा रास्ता जो दो रास्तों में बट जाता है. वो सोच में पड़ जाता है कि कौन सा रास्ता लूं. एक ऐसा रास्ता जिस पे लोग चले हैं और एक ऐसा रास्ता जिस पे शायद ही कोई इंसान चला हो. तो बहुत सोचने के बाद वो एक रास्ता चुन लेता है और फिर थोड़ी दूर बाद कहता है कि यार शायद दोनों रास्ते ठीक हैं, ये भी वैसा ही रास्ता है. और फिर कहता है फ्यूचर में शायद मैं पछताऊंगा कि मैंने वो रास्ता क्यों नहीं चुना. अगर वो फ्यूचर में पछताता है तो आज ही क्यों नहीं वो थोड़ा सा पीछे मुड़कर और वही रास्ता चुन लेता है. एक सवाल कि वो आज ही क्यों नहीं वो रास्ता इख्तियार करता है अगर उसको फ्यूचर में पछताना पड़ेगा और बहुत सालों के बाद पछताना पड़ेगा. एक सवाल. और दूसरा सवाल ये है, इस जब आप पढ़ते हो ये पोएम, हम अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं कि why does the poet regret his decision at the end. वो कहीं पे नहीं लिखा है. अगर आप पोएम पढ़ोगे तो वहां पे sigh लिखा है. that sigh can be a sigh of regret and that sigh can be a sigh of relief. So it depends upon the reader how he can or she can take it. And number second, that has made all the difference. एक जगह पे है कि इस एक डिसीजन ने बहुत तब्दीली लाई है मेरी ज़िंदगी में. अब कैसे पता चलता है आपको ये वो तब्दीली खुशी की तब्दीली है या गम की तब्दीली है. तो ये दो सवाल है. और एक सवाल और, द रोड नॉट टेकन, टाइटल इसका ये होना चाहिए था द रोड टेकन, बिकॉज इट्स अबाउट द रोड टेकन, not about the road not taken. So all these answers will be finding out in the poem, in the analysis when we dissect this poem. And मैं 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए शॉर्ट समरी है. मैं फिर जब YouTube में डालूंगा वहाँ पे जो टाइम पैरामीटर है वहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ तक 9th क्लास के लिए और इसके आगे फिर इन क्लासों के लिए है, and they will go accordingly. So let's go straight away to the poet, Robert Frost, American poet, educator भी है, born March 26, 1874, address San Francisco, California, United States, the United States of America, died on January 29 and in the year 1963, and his address is Boston, Massachusetts, United States. So these are his books. He has written Stopping by Woods, On a Snowy Evening, A Boy's Will, and many more books. He has won these awards, Pulitzer Prize for Poetry, United States Poet Laureate, and other distinctions he has got during his life. So this man is Robert Frost. So before going to the poem, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, खासकर वो बच्चे जो अभी 10th पास करेंगे, 12th में आएंगे, जब आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है, या तो आपको साइंस लेना है या तो आपको कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटी में कोई सब्जेक्ट लेना है या आपको आर्ट्स लेना है, तो ये डिसीजन आपको फिर पूरी लाइफ के लिए अप्लाई होता है. तो यहाँ पे एक डिसीजन आपका मतलब टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है कल.
तो एक डिसीजन सारी लाइफ पे इम्पैक्ट कर सकता है. तो व्हेन यू हैव टू मेनी चॉइसेस इट बिकम्स टफ एट टाइम्स what thing to pick up, and so with these all things at your hand, you are perplexed. So ultimately you have to take some decision. चाहे ये जो चॉइसेस हैं हमारी लाइफ में बार बार आ जाती हैं, बचपन में भी, एडल्टहुड में भी, व्हेन यू आर इन योर मिडिल एज. तो वहाँ पे भी बचपन में ये हो सकता है कि आपको पिकनिक भी जाना हो और आपके रिलेटिव में या घर में शादी भी हो, आप परेशान हो जाते हो पिकनिक जाऊं या शादी अटेंड करूं. तो जब आप पिकनिक जाते हो तो दिमाग में ये रहता है कि काश शादी भी अटेंड कर लेता. या अभी जब आप 10+2 में आओगे, एक फैसला लेना पड़ेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है. या बाद में जब आप जॉब चूज़ करते हो, डॉक्टर बन जाते हो, काश मैंने इंजीनियरिंग की होती, तो इंजीनियरिंग करते हो तो काश मैंने टीचिंग जॉब की होती. सो दीज चॉइसेस make you perplexed, make you confused, but ultimately you have to take a decision. We are always faced with difficult choices in life. It's your ability to make that choice on your own that defines you. लेकिन यहाँ तक जो सवाल मैंने किए थे उनका जवाब अभी नहीं मिला. So for that we have to read the whole poem, and in reading the whole poem, and you will get some new words here. Please try them at your home. I won't be telling you the meaning of those words. For example, we have diverged here, yellowwood here, beaten, trodden, undergrowth. So these things I will avoid, for we are running short of time. So जब हमारे शायर साहब गुजरते हैं एक जंगल से, वो एक रास्ते पे पहुंचता है, a fork in the middle of the way that diverts into two paths. तो शायर यहाँ पे फिर आ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि कौन सा रास्ता चुन लूँ. तो इस बारे में आज ये पोएम है, लेकिन इट इज सिंपल बट इट हैज मेनी लेयर्स ऑफ मीनिंग. लेट्स गो फॉर द ब्रीफ समरी ऑफ the poem. The literal meaning of this poem by Robert Frost is pretty obvious. A traveler comes to a fork in the road and needs to decide which way to go to continue his journey. After much mental debate, the traveler picks the road less traveled by. The figurative meaning is not too hidden either. The poem describes the tough choices people stand for when traveling the road of life. So there is an extended metaphor used here in this poem. The words sorry and sigh make the tone of poem somewhat gloomy. The traveler regrets leaves the possibilities of road not chosen behind. He realizes he probably won't pass this way again. This is for those students who are in class 9th. ये sorry और sigh मुझे इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ा because it's in their exams that they are asked why does he regret his decision, but I don't agree with it. But for the exam point of view, they can pick it here and learn it by heart and do it in their respective exams. Here is the full text of the poem. Two roads diverged in a yellowwood, and see, I have numbered each line with the rhyme scheme here. A, B, A, A, B. We will be telling this rhyme scheme later in the coming slides. So for now I will read it for you. Two roads diverged in a yellowwood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as could to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference.
So look at these lines, line 16 and 17. I won't be moving cursor because it's an headache. 16, there is sigh, but here you have no hints that it's a sigh of relief, or whether it's a sigh of relief or sigh of regret. And also in line 20, you don't have any implications that it is the negative difference or positive difference. So it depends upon the reader how he takes it, or how she takes it. So stanza-wise meaning for class 9th, the narrator finds two roads that goes into a wood. The narrator wishes to travel both of the roads. Unfortunately, it's not possible for one to travel both roads. So he cannot footstep himself into two copies, send one copy on the road, on one road, and send another copy on the other road. In these lines, two roads diverged in a yellow wood. Sorry, I could not travel both. Sorry for my accent, this comes in when I am in touch with my students. Okay, stanza 2 meaning the narrator chooses road that looked less worn. Here's spelling mistake in choose. But both paths are equally worn in reality, then took the other as just as fair. So both the paths are equally worn in reality. When he sees practically, he walks on that path and then he realizes, no, this doesn't make any difference. Both the roads are same. Then took the other as just as fair, because it was grassy and wanted wear, had worn them really about the same. And in stanza 3, he says the author hopes to come back another day so he can travel, but it's impossible. Especially when it's the road of life. So he cannot come back, and he cannot travel in a time machine. The writer doesn't know if he will come back, but he hopes that knowing how way leads on to way. जब आप जिंदगी का एक रास्ता चुन लेते हो, फिर पता नहीं वो रास्ता कितनों रास्तों में बढ़ जाता है, तो आप वो ना जिंदगी के जंगल में खो जाते हो. एक जाल बना है रास्तों का. Doubted if I should ever come back. और वो जाल आपको फिर वापस नहीं आने देता है एक बार आपने कोई डिसीजन लिया. And stanza 4, the writer has took a path that not many people have. He made a difference. More people can travel that path now. I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो कभी वो कहता है कि वो कम ट्रैवल हुआ था वो रोड, और कभी अभी एंड पे कहता है कि फिर कहता है कि नहीं, दोनों रोड सेम थे. अब एंड पे कहता है कि I took the one less traveled by. So man is a mixture of all feelings. He has emotions, he has feelings of sorrow, feelings of joy, he has feelings of negativity, he has feelings of positivity. So with these contradictions make your life. This is a literal meaning and a simple meaning of the poem. Now we will dissect it more, and we will analyze these lines more. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. We immediately know the speaker is faced with a choice. In first line you see two roads in red, diverged in a yellow wood. Diverged means extended in different directions. In a yellow wood, yellow indicates autumn. The idea behind using autumn is that it's fall season, they call it in the US, that the year is coming to an end, a time for reflection. It can symbolize his because it is his late life decision. It can symbolize his old age also. Then these lines, line 2, and sorry I cannot travel both. The speaker regrets that he cannot travel on both routes and still remain one traveler, like I said in the previous slides. And be one traveler longer stood. He stayed at the spot for a very long time. सोच में पड़ा था, बहुत देर तक सोचा कि क्या करूं, वहां जाऊं, to be or not to be. That's the question, the dilemma that Hamlet faced in the play Hamlet. And looked down one as far as it could to where it bent into the undergrowth. So literally the speaker is on a journey somewhere and is faced with the choice of which road to take. And if we speak figuratively, the journey represents life, and the choice leads to the choices we have to make. He took the time to look down one road till he could see no further. It bent away due to a curve in the road. तो आप मुस्तकबिल भी जो हमारा होता है, फ्यूचर आप नहीं देख सकते हो. It's only Almighty who can tell our future, who can see, who has full knowledge of our future. But we cannot foretell the future. We cannot see our future. It's concealed
तो ये अंडरग्रोथ जो है या जो कर्व है रोड पे, दिख नहीं रहा है ये रास्ता कहाँ जाता है, यही फ्यूचर में भी है। अब अगर साइंस लेते हो, आपको पता नहीं कल ये साइंस सब्जेक्ट वेदर यू वुड कम टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द साइंस सब्जेक्ट और नॉट, ये फ्यूचर ही बताता है। या आप कोई डिसीजन लेते हो जॉब का, तो क्या पता ये डिसीजन आपको कहाँ ले जाएगा। सो इट्स ऑलवेज कंसील्ड एंड इट्स ऑलवेज डार्क नहीं होता है फ्यूचर, सबका ब्राइट होता है। डार्क इन द सेंस इट्स वी डोंट नो अबाउट फ्यूचर। सो स्टैंजा 2 line 6 to 10 then took the other, surprisingly after spending a lot of time looking down one path the speaker takes the other. तो एक तो रास्ता लेना था उसको, जंगल से बाहर आना था। as just as fair both paths took a look as fair beautiful as each other. तो उसको रियलाइज होता है कि शायद यार दोनों रास्ते ही सेम हैं। कल खुद कल सरद इतकनन इसमनंश, जब आप एक डिसीजन लेते हो फिर बोलते हो क्या यार ख़राब है, फिर दूसरा डिसीजन लेते हो यार ये उससे भी ख़राब है। तो द थिंग इज शायद ये यहाँ पे एक हिंट है कि बी सेटिस्फाइड विद लॉट, बी कंटेंट विद योर लॉट। अपनी तकदीर से जो आपके मुकद्दर में मिला है उससे आप मुतमिन रहें। And having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. However, the path he has chosen has the better claim, an informal right to him traveling on it. Contradiction यहाँ पे हो रहा है। However, the path he has because it was grassy and wanted wear. So दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, कभी अपने आप को दिलासा देता है। Though as far as that passing there had warned them really about the same. Again फिर उसी बात पे आ जाता है, it was more grassed over and it was clear that very few people had taken that particular path. Or these green lines they indicate these refers to here to the point at the fork in the road when many others who have stood and thought about which path to choose. The particular point would be worn down as many people would have spent time there wondering which path to decide on. So the speaker felt adventurous, he felt displaying independence and individualism and वो flow के साथ नहीं जाना चाहता था, वो एक कुछ different करना चाहता था, अलग करना चाहता था। He did not want to follow everyone else. He did not want to conform. Instead, he displayed freedom of choice. तो कहीं न कहीं यहाँ पे free will and destiny भी आ जाती है। तो it's his luck whether that road turns out to be a fortune for him or to be some trouble for him in the future. Lines 11 to 15 हो गया शायद, and now we are at line 16 to 20. I shall be telling with this size somewhere ages and ages, hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. The speaker will tell this story with a sigh of regret. पता नहीं regret है, but for the students who have to appear in the exams, have to write this thing there. He would have loved to have traveled along the other path to see where it would take him and how it could have influenced his life. The story will be told many years hence from this time. वो present में सोचता है कि future में पछताएगा. The speaker is imagining looking back on this moment. So यहाँ पे एक colon है छोटा सा yellow में. हाँ, the colon indicates the story is about to follow. क्या story है? Two roads diverged in a yellow wood. So he goes back. फ्यूचर में वो फिर बैक आ जाता है। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, एक रास्ता दो रास्तों में बढ़ जाता था, फिर मैंने एक लिया और उसने सारी ज़िंदगी में तब्दीली लाई। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। सिचुएशन ये है, टू रोड्स डाइवर्ज, एक्शन है, द स्पीकर टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। और नोट रिपीटेशन ऑफ आई, जो आई है यहाँ पे लाइन 18 के एंड पे आई और 9 इट flows in the other line, that's line 19. I took the one. So this is the repetition of I conveys his firm intention. It emphasizes that this is his individual personal decision, not influenced by the group. So वो flow के साथ नहीं जा रहा है। So the speaker does not regret his choice as that choice has made all the difference in his life. The speaker took the path less used. The speaker refers to making the unpopular choices in life. So this is about the summary. About the analysis of the stanzas that we find in the poem. Now we have tone and mood. The tone used and mood created is reflective and nostalgic.
Nostalgia means longing for familiar things, usually from the past. The poet is reflecting. This is mood of the poem. The poet is reflecting on, thinking about the decision he had to make, and is nostalgic for the path he was unable to take. Relates to having to make decisions and looking back on the consequences of those decisions. So why the road less traveled? The poet makes it clear that the path was more attractive to him and won his approval because it was less worn by other travelers. The lack of other travelers makes it more appealing to him. It appeals to his individuality and sense of independence. उसको भाया, उसको लगा कि ये रास्ता मेरे लिए बना है, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ. So the road less traveled by. So what's the message? He wants us all to realize that in life we face many different choices. There will be options, and that will be popular with a lot of people. Options, चाहे वो रिश्ते का मसला हो, जॉब का मसला हो, सब्जेक्ट लेने का मसला हो. तो ये चॉइसेस, या आप क्लोथ्स लें, या आप शॉपिंग करें, या आपको मकान बनाना हो, जगह लेनी हो. सो यू आर फेस्ड विद लॉट्स ऑफ चॉइसेस एंड जब when you have lot of choices you are confused, you are not satisfied. पुराना वक्त एक था जब हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, DD1 हुआ करता था. वो भी शायद 24 घंटों में से 9 घंटे चलता था और बाकी घंटे वो बंद रहता था. अगर सन 47 की भी कोई फिल्म चलती बकवास तो उसमें भी मज़ा आ जाता था उसको देखने. ब्लैक एंड वाइट टीवी था और बच्चे थे तब, समझ भी उतनी नहीं थी. तो ये जो है, सॉरी आई हैव हियर, तो ये डिसीजंस हमको लेने पड़ते थे. वहाँ पे डिसीजंस लेने नहीं पड़ते थे और वहाँ पे चॉइसेस कम थी, तो उन चीज़ों में हमें मज़ा आ जाता था. ब्लैक एंड वाइट समझ नहीं थी उतनी, लेकिन वो फिल्म हम बड़े आराम से देखते थे. वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म होती थी, पता नहीं स्टोरी क्या थी फिर भी हम देखते थे. लेकिन जब से ये चॉइसेस हमारी ज़िंदगी में आ गई, वबाल बन गया है यार, क्या लूँ कैसे लूँ, इंसान सेटिस्फाई नहीं है. सो वंस वी हैव मेड अ डिसीजन, आवर पाथ एंड देयरफॉर आवर फ्यूचर हैज़ बीन डिटरमिनेड. वी कैन नॉट गो बैक एंड चेंज द डिसीजंस वी हैव मेड. Moving further, what is the theme of the road not taken? The main theme of the road not taken is that it's often impossible to see why life-altering decision will lead. Thus, one should make their decisions swiftly and with confidence. It's normal to wonder what the outcome would have been if. So, risks you have to take a risk. Don't look future. पता नहीं future में क्या लिखा होगा, but you have to take a risk here. It's normal to wonder about the outcome would have been if the road not taken, was the road chosen. But to contemplate this hypothetical deeply is folly, for it's impossible to say whether that taking the other road would have been better or worse. All one can say is that it would have been different. So आपको कैसे पता चलता कि ये रोड लेने से मुझे फ्यूचर में ये हो जाएगा? Maybe sometimes blessings work in disguises also. So background of the poem, many of you might would have studied this poem. Robert Frost wrote this poem to highlight a trait of and poke fun at his friend Edward Thomas. एक friend था उसका, English Welsh poet था, उसका नाम था Edward Thomas, who when out walking with Frost in England would often regret not having taken a different path. Thomas would sigh over what they might have seen and done, and Frost thought this quaintly romantic. तो वो अक्सर उसके साथ बैठा उठा करता था, तो उसकी सोहबत में रहता था जो हमारे शायर साहब हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इंग्लिश वेल्श पोइट एडवर्ड थॉमस. जब भी उसके साथ वो कहीं टहलने को निकलता तो वो हमेशा पछताता रहता, कंप्लेंट करता रहता, रिग्रेट करता रहता, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने अपनी ज़िंदगी में ये लिया होता, तो वगैरह वगैरह. सो फ्रॉस्ट ने इस बारे में सोचा, चलो यार अच्छा थीम मिल गया, अच्छा आइडिया मिला मुझे पोएम लिखने का. बैकग्राउंड एंड इंटरेस्टिंगली ये देखें आप, शायद आपको उन सवालों का जवाब मिलेगा जो मैंने एट द ऑनसेट ऑफ द जब वीडियो स्टार्ट किया था. इन अदर वर्ड्स, फ्रॉस्ट's friend regretted not taking the route that might have offered the best opportunities, despite it being an unknown. Frost liked to tease and goad. He told Thomas, no matter which road you take, you will always sigh and wish you had taken another. So what if से हमारी ज़िंदगी बड़ी है, तो वो उसको हमेशा कहता था चाहे आप कोई भी रास्ता चुन लेते,
तो आप पछताते ही पछताते। आपको अगर इस रास्ते, फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू पाथ्स, पाथ ए पाथ बी, रोड ए रोड बी। रोड ए पे जाते तब कहते काश मैंने रोड बी लिया होता, रोड बी पे जाते तो कहते कि काश मैंने रोड ए पे लिया हो, रोड ए लिया होता। तो यही वजह है कि वो फ्यूचर में बोलता है कि मैं पछताऊंगा, फिर भी वो पछताएगा, बिकॉज अगर वो पहला वाला रोड भी लेता तब भी वो पछताता, बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर। मोस्ट ऑफ अस डू, मोस्ट ऑफ अस हमेशा पछताते रहते, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने वो किया होता। तो हमारी लाइफ इज फुल ऑफ इफ्स एंड बट्स एंड व्हाट इफ, अगर ये हुआ होता, अगर वो हुआ होता। सो इट्स दिस इज द आयरनी ऑफ लाइफ. So it's ironic that Frost meant the poem to be somewhat light-hearted, but it turned out to be anything but. People take it very seriously. Research हो रही है, लोग पढ़ रहे हैं और इसको इतने सारे प्रेज मिला इस पोम लिखने में. तो this is how this poem came into existence. This is how he got the inspiration from. So last two stanzas फिर से देखें आप. And both that morning, सवाल एक अगर फिर से आप मैं दोहराऊंगा. पहला सवाल था कि वो क्यों पछताएगा, अगर पछताना उसको फ्यूचर में पछताता, उसको पछताना पड़ा तो आज क्यों नहीं वो रोड सी रोड पे चलता. एंड नंबर सेकंड सवाल था कि हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे साई ऑफ रिग्रेट है और यहाँ पे नेगेटिव डिफरेंस है. सो इट्स नॉट इंडिकेटेड हियर, इट कैन बी साई ऑफ. दिस इज द यूनिवर्सल अपील ऑफ पोएम्स कि एक परसेप्शन बन जाता है. जिस हिसाब से आप पोएम लोगे तो उसी हिसाब पे आपको फिट. दैट्स व्हाई दीज पोएम्स अपील टू लॉट ऑफ पीपल irrespective of their age, color, religion, etc. So last two stanzas फिर से देखें आप. और तीसरा सवाल था कि रोड नॉट टेकन क्यों. रोड नॉट टेकन, द पोएम इज अबाउट द रोड नॉट टेकन, नॉट अबाउट रोड टेकन. बिकॉज हम हमेशा पास्ट में जीते हैं कि शायद वो मतलब फ्यूचर में कम जीते हैं और प्रेजेंट में कम जीते हैं, और फ्यूचर की ज़्यादा फिक्र होती है, ज़्यादा जीते हम पास्ट में. कंफ्यूज हुए आप. तो हमें जो फिक्र होती है वो फ्यूचर की होती है, और जीते रहते हैं हम पास्ट में, और हमारा प्रेजेंट कहीं दिखता नहीं है. सो इट्स अबाउट द रोड नॉट टेकन. काश वो पास्ट में हमेशा, जो ये इंसान की फितरत है कि पास्ट में जाता है. तो एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले दिस कंट्रडिक्शन. पहले स्टंजा में फिर बोलता है कि नहीं दोनों रास्ते सेम है, और फिर बोलता है कि फ्यूचर में पछताऊंगा मैंने वो ही रास्ता क्यों नहीं लिया. So this is all about the meaning of the poem. So it's up to you whether you take it in a negative way or you take it in a positive way. So it's up to you. I won't thrust my opinion on you. So you are free at this decision. तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. एक ये है कि चॉइसेस हैं तो वहाँ पे हमें परेशानी हो जाती है, और दूसरा ये है कि हम पास्ट में जीते रहते हैं. एक्सक्यूज मी. और तीसरा ये कि मैन इज़ फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस, और कंट्राडिक्शंस ही शायद इंसान में वो एनर्जी, वो पावर लाता है, जीने की राह दिखाता है. सो इट्स फुल ऑफ मीनिंग, मेनी लेयर्स ऑफ मीनिंग. सो जितना आप इसको खींचोगे ये खींचता ही जाएगा. स्ट्रक्चर ऑफ द रोड नॉट टेकन. दिस पोएम कंसिस्ट्स ऑफ 4 stanzas, each 5 lines in length, with a mix of iambic and anapistic tetrameter. इस पे हम कभी और बात करेंगे. जो मीटर है या प्रोजरी पे हम बात करेंगे कभी, पोएटिक डिवाइसेस, फिगरेटिव स्पीचेस पे. यहाँ पे आप देखें मोस्ट कॉमन स्पीच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ iambs and anapistic. So Frost chose his lines to reflect this. Two roads जैसे आप दिख रहे हो जो bold letters हैं, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. This simple looking poem, most monosyllabic, has a traditional rhyme scheme. अगर आपको ये पोएम ऑनसेट में देखी होगी तो मैंने हर लाइन के एंड पे ए बी लिखा था. तो दैट्स द राइम स्कीम ऑफ द पोएम विच हेल्प्स. और इस पे मैंने बात की है एक वीडियो में, राइम स्कीम कैसे हम करते हैं, कैसे उन बच्चों के लिए जो अभी नए हैं
English में, which helps keeps the lines tight whilst the use of enjambment एक line फिर दूसरे line में चला जाता है, एक flow मिल जाता है line को, where one line runs into the next with no punctuation keeps the sense flowing. So this is the structure of the poem. Symbolism of the road not taken. So lot of symbolism, lot of रॉबर्ट फ्रॉस्ट को तो जानते ही हो यार, इमेजरी क्या इस्तेमाल करता है, ऑडियो इमेजरी हो, विजुअल इमेजरी हो. आप आफ्टर एप्पल पिकिंग जब आप पढ़ते हो तो आपको सच में लगता है कि आपके हाथ उस सीढ़ी को पकड़ते हैं और वो खुशबू जो सेबों से आती हैं वो सूंघने को मिलती हैं, और जो वो फिर एक साउंड निकलती है जब आप सेब्स जो एप्पल्स हैं वो आप इन हीप्स डालते हो तो एक साउंड निकलती है एप्पल्स की, वो आप सुनने को मिलता है. सो इस बंदे के पास एक मतलब इमेजरी का खजाना था. जैसे कि the road itself symbolizes the journey of life. An image of road forking off into two paths symbolizes a choice. As for color, Frost describes the forest as a yellow wood. Yellow can be considered middle color, something in between, unsure of itself, or it can relate to his middle age also. This sets the mood of indecision that characterizes the language of the poem. Frost also mentions the color black in the lines, for example, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black undergrowth. It's a dark future, it's considered future, you cannot foretell. एक meaning ये भी हो सकती है. Clearly, this is to emphasize that both roads appeared untouched, not having been tarnished by the foot of a previous traveler. The poet is the first to encounter this dilemma. So what is the point of view of the road not taken? Point of view किस यहाँ पे कौन नेरेटर है? सो पॉइंट ऑफ व्यू पे कभी और बात करेंगे, थोड़ा सा अभी यहाँ पे देखें आप. द पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑफ द ट्रैवलर हु वॉकिंग अलोंग अ सिंगल पाथ एनकाउंटर्स अ फोक इन द रोड एंड स्टॉप्स टू contemplate which path he should follow. It's for those students who are in their bachelors and doing bachelors in English literature. How do the roads differ in the road not taken? The two roads in the road not taken hardly differ. कोई फ़र्क नहीं था दो रास्तों में, दोनों रास्ते एक जैसे दिखे. जैसे शायर खुद कहता है, फिर जो स्पीकर है, नरेटर है, खुद कहता है फिर एक स्टेंजा में, बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. The first road is described as bending in the undergrowth. The second road is described as just as fair, though it was grassy and wanted wear. At this, it seems the second road is overgrown and less traveled, but then the poet writes, though as far that passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves, no steps had trodden black. So again, the roads are equalized, yet as if to confuse the reader. Frost writes in the final stanza, I took the one less traveled by, and that has made all the difference. With that, we are left to wonder how Frost knew the road he took was the one less traveled by, but Frost likely left this ambiguity on purpose. Ambiguity, purpose, deliberately, ये जो है शक है, जो एक ambiguity है इसमें, क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, so that the reader would not focus on so much on the condition of the road, and instead focus on the fact that he chose a road, any road, whether it was that which was less traveled by or not, and that as a result he has seen a change in his life. Change, So I have got some sources from this Norton Anthology of Poetry 2005 and The Hand of the Poet, और आप खुद देख सकते हो. These are the sources for this session with you, and थोड़ी सी मेरी मेहनत भी गई है इसमें, so दाद दीजिएगा और feedback दीजिए, whether it's in negative sense or positive sense, but I will take it positively, whatsoever it is. Thank you very much. I'm Farooq Lone. I'll be soon joining with you with some new stuff. Till then, take care. Allah Hafiz.